we discuss buoyancy and stability. That's another thing that is very important in our everyday life, and it's related to fluids, the pressure, and buoyancy is a result of pressure exerted on a body that is sunk into a liquid or a fluid for that matter. So it's a common experience that an object feels lighter and weighs less in a liquid than it does in air. This can be demonstrated easily by weighing a heavy object in water and by a waterproof spring. Any scale, if we do that, we will see that this can be the scene, that the object will be lighter in a liquid as compared to in a air. Also, objects made of wood or other light materials, they float on water. So this is a everyday observation that if we throw away a small piece of wood or a lightweight, let's say aluminum or something of that kind, then it will float on the surface of the water and it doesn't sink. The heavier thing can sink, but then it weighs less. These and other observations suggest that a fluid exerts an upward force on a body that is immersed in it. This force that tends to lift the body is called the buoyant force and is denoted by F. अगर हम किसी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में या लिक्विड में डुबोने की कोशिश करें, तो दैट लिक्विड applies a reactionary force, we call it as buoyancy. तो उसमें फिर वो जो ऑब्जेक्ट है, unless it is too heavy, then it weighs less, और वो उसमें डूबता नहीं है बल्कि वो फ्लोट करता है. तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं. इसके ऊपर सरफेस एरिया, द वेट, द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, बहुत सारी चीजें इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं. एट वी विल बी लुकिंग एट in the later part of our course. But here, since we are only mentioning about buoyancy and the stability of objects when something is immersed or dipped into liquid, so we are just introducing this thing. The buoyancy force, the buoyant force, is caused by the increase of pressure in a liquid with depth. तो अब हम प्रेशर को हम देख चुके हैं कि अगर H इंक्रीज होता है, रो जी H, द इंक्रीज इन H विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रेशर. सो अगर हम किसी चीज को इसी तरह से डुबोते हैं तो द फोर्स, द डीपर वी गो, देयर विल बी मोर फोर्स दैट विल बी पुशिंग द ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स. वी कॉल इट buoyancy force. It may be noted that the buoyant force is independent of the distance of the body from the free surface. तो फ्री सरफेस से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वहां पर जो प्रेशर लेवल है वो कांस्टेंट है. इट इज एक्चुअली द H दैट इज प्लेइंग द रोल. द डेप्थ अगर हम उसको H से या Z से डिनोट करें तो दैट इज व्हाट इज बीइंग इम्पोर्टेंट. इट्स ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द density of the solid body. So, for example, consider an arbitrarily shaped solid body submerged in a fluid at rest and compare it to a body of fluid of the same shape indicated by dotted lines at the same distance from the free surface. अब अगर हम आप यहाँ पर देखिए, एक लिक्विड है, certain amount of fluid है, उस फ्लूइड में एक सॉलिड बॉडी दैट इज बीइंग शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो उसको डुबोया गया है. एंड देन वी आर इमेजिनिंग, ये डॉटेड लाइन में जो है वो फ्लूइड ही है, और वी इमेजिन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड जो एक वॉल्यूम है जिसको हम इमेजिन करते हैं जो उतना ही वॉल्यूम का है जितना के सॉलिड बॉडी है, और फ्री सरफेस से इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो बराबर है.
The buoyant forces acting on a solid body submerged in a fluid and on a fluid body of the same shape at the same depth are identical. The buoyant force F at B acts upwards through the centroid C of the displaced volume and is equal in magnitude to the weight Ws. तो जैसे ये हम इसको देखें, ये W is the buoyant force, C is centroid और Fb is the buoyant force that is being exerted by the fluid on these two things, the fluid and the solid body that is being submerged. For a solid of uniform density, its weight Ws also acts through the centroid, but its magnitude is not necessarily equal to that of the fluid that it displaces. So thus Ws, solid body का जो weight है, that will be greater than W itself, and W of S will be greater than the buoyant force that is being applied on it. Thus, this solid body would sink. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर solid body का जो weight है वो buoyant force से ज़्यादा है. So इसलिए the body is going to sink. अगर ऐसा ना हो, if Ws was less than Fb, then the same thing will float. The imaginary fluid is in static equilibrium, and that the net force and net moment acting on it are zero. Therefore, the upward buoyant force must be equal to the weight of the imaginary fluid, whose volume is equal to the volume of the solid body. So, in case of fluid, वो दोनों बराबर हैं. The buoyant force भी उतना ही है जितना उस solid body का, उस fluid body का weight है, and therefore the net result is zero, और वो body वही रहती है जहाँ पर वो मौजूद है. Whereas in case of the solid body, we observed that since Ws is greater than the W, therefore it would sink. Further, the weight and the buoyant force must have the same line of action to have a zero moment. This is known as Archimedes Principle after the Greek mathematician. आपको याद होगा कि आर्किमिडीज ने, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये आर्किमिडीज करके हम पुकारते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जब हम उर्दू में अगर लिखें तो हम आर्किमिडीज करके लिखते हैं. तो आर्किमिडीज ने ये मालूम किया कि व्हेन कोई चीज़ पानी में या लिक्विड में डुबोई जाती है तो वो हल्की महसूस होती है और it displaces the amount of liquid as per its volume, equal to the volume. और this was a very significant change. इससे specific gravity of items of solid या जो भी ऑब्जेक्ट हो वो मालूम की जा सकती है. और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं और ये देखा जा सकता है कि कौन सी चीज़ सिंक करेगी, कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी, एंड सो ऑन.